हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग SIBM के फॉर्म को देखेंगे एंड उसमें किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना है वो समझेंगे। मेरे साथ मेरी को मेंटी है आंचल, who got an SIBM कॉल एंड शी फाउंड द गेम्स प्रीटी इजी। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि लास्ट टाइम तो काफी टफ थे। बट वेलकम आंचल, आर यू हियर? तो पहले ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। बेसिक कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप अब कैरेक्टर लिमिट है, सो इट्स कैरेक्टर लिमिट नॉट वर्ड लिमिट। आई होप दैट इज क्लियर। यहाँ पे क्या कैरेक्टर्स दिखा रहा है? जो टाइप एक बार देखो। हॉबीज में नहीं दिखा रहा बट आई ट्राई टाइपिंग इसमें अचीवमेंट इन एकेडमिक्स उसमें इट्स शोइंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सो यू कैन जस्ट डू इट थ्रू गूगल डॉक एंड सी। अब हॉबीज में ऑब्वियसली इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो, रियलाइज अगेन वन थिंग व्हाट आई विल से। हॉबीज में वही चीज लिखना जिसके बारे में आप काफी देर तक बात कर सकते हो, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स को हॉबी लिया है तो उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसमें एफ्लुएंट पीपल कौन है, इंडिया क्या रैंक चल रहा है, फ्यूचर वगैरह। वैसे ही अगर कोई पेंटिंग, आर्ट, कुछ भी हो, whatever you can talk about for 10-15 minutes, you right? If you don't have a hobby, see, hobby is like committing to something. But जैसे मेरा कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं था, आई हैड सर्टेन सेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने लिख दिया था कि आई हैव सर्टेन सेट ऑफ इंटरेस्ट विच हेल्प मी पास माई लीजर टाइम। एंड फिर मैंने उन इंटरेस्ट के बारे में लिखा। द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे हियर इज, अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी सेइंग मेरी कोई हॉबी नहीं है। यू कैन गो दिस वे एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू से कि इंटरेस्ट है, देन इट इज सेफ। इट इज सेफ क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट व्हेन यू से इट्स अ हॉबी, दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। सो आचल, आई होप दैट इज क्लियर। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस फ्रंट? नो। चलो, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर ऑब्वियसली ठीक है। एक बार ये ड्रॉप डाउन देखो, इसमें क्या है? दिख नहीं रहा मेरे को ड्रॉप डाउन। Okay, I think it's not visible on the screen. Can you read what are the options in the drop down? It says awards won at school level, district, state, national, international, and then participation at district, state, national, international. Like separately सबका stake किया है. ठीक है, सो कैन यू सेलेक्ट मल्टीपल, कि एक ही को No, सेलेक्ट? only one. ठीक है, सो देन सेलेक्ट योर मोस्ट एफ्लुएंट वन, ऑब्वियसली विच वन इज द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स। अब उसमें बोला है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ योर अचीवमेंट इन एकेडमिक्स। सो हो सकता है कि यू कुड हैव वन मल्टीपल इन डिस्ट्रिक्ट लेवल और मल्टीपल इन स्टेट लेवल। अगर किसी के बारे में मल्टीपल भी है तो लिख सकते हैं। What I would suggest you, if there is some kind of award, like you have one international but you have one national as well and you want to mention it, so you can write it by following up additionally. However, there is one good thing here, that since they have given it in this way, if they ask you tell us something which is not in your CV, you'll have something in your pocket to tell, क्योंकि ये चीज वहां पे नहीं जा रहा है. But if you mention everything, then probably from the academic sides you won't have anything to mention which is not in your CV. So again, reiterating, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है उसको लिखो. अगर कुछ एडिशनली मेंशन करना है जो एकदम करने का मन है, तो एडिशनली लगा के लिख दो. थोड़ा सा लिखना, ज्यादा मत लिखना, बिकॉज दे हैव स्पेसिफाइड द हेड. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी. इज देयर एनी डाउट्स ऑन दिस फ्रंट? No, no doubts. ठीक है, लेट्स मूव ऑन देन. अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, तो क्या स्पोर्ट्स में भी सेम है? हाँ, same. Award and participation at school, district, up to international. तो फिर वही करना. यहाँ पे अगेन, कीप इट लिमिटेड, डोंट टेल एवरीथिंग. ताकि टेल अस समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर सीवी में यू हैव समथिंग डिफरेंट टू मेंशन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. इफ यू हैव 2-3 स्पोर्ट्स ओनली एंड काफी लिमिटेड आपका अचीवमेंट रहा है, तो आई वुड से 2 डाल दो और एक तो अपने पास रख के रखो, ताकि यू कैन शो द मल्टी डिमेंशनल थिंग्स दैट यू हैव ट्राइड, rather than just being on one thing, कि या तो सिर्फ पूरा एकेडमिक किया या पूरा स्पोर्ट किया. यू हैड अ मिक्स, एंड इवन इन स्पोर्ट्स यू हैड अ मिक्स, जिसमें से 2 तो आपने बता दिया और एक आप अपने पास रख के रखे, which you want to talk about it in the interview. The point is they have asked you the description. So what happens is कि आप पूरा डिस्क्राइब करोगे उसके बारे में, which says indirectly कि इस बारे में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला इंटरव्यू में. This is all that you are writing in front of me. So you have to write it in a well-mannered way. But then again, if you want to talk about something in the interview, you need to have something. Like अगर फॉर्म में ही सब कुछ लिख दिया, तो what will you talk about in the interview? So always have some things. Not everything should be put in these kind of forms, so that you have some things to talk about in the interview. I hope that's clear. Yes, I have a doubt हाँ though. हाँ, बोलो.
So I have no sports achievement. Mm-hmm. So what should I do? Should I leave it blank? हाँ, Like, should I fine. write something that I've participated, but like just on a basic level? ठीक है, पार्टिसिपेशन इन स्कूल का ये डाल सकते हो ऑब्वियसली। स्कूल का हाउस को रिप्रेजेंट किया है, क्लास को रिप्रेजेंट किया है, सेक्शन को किया है। इवन द माइन्यूट लेवल थिंग्स आल्सो यू कैन राइट, बट अगेन we never know if they ask for a proof, because there are a lot of people who might not have any participation but they have just written for the sake of it. So if you have participation and you are writing something, at least be sure that you have some kind of proof, if not a certificate, to back yourself up, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो कोई प्रूफ मांगे और फिर आपके पास हो नहीं, देन इट कम्स अक्रॉस दैट यू लाइक, विच इज द लास्ट थिंग दैट यू वुड लाइक इन द इंटरव्यू टू बी। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रख लो बस। Okay. हम्म। एक्स्ट्रा करिकुलर, तो एक्स्ट्रा करिकुलर पहले बताता हूँ क्या होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर के बीच में डिफरेंस है। को करिकुलर क्या है, आपके स्कूल वाले कराते हैं एंड इट्स अटैच विद दैट, कि दैट कैन बी डन बाय स्कूल अथॉरिटीज एंड ऑल। एक्स्ट्रा करिकुलर आपका करिकुलम के अंदर नहीं आता, इट्स एवरीथिंग दैट यू डू आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, वो स्कूल कराता है, इट्स कंपलसरी, तो आप कर रहे हो, इट्स को करिकुलर। अगर एनएसएस करवा रहे हो, वो स्कूल करवा रहा है, इट्स को करिकुलर। बट लेट्स से यू हैव डन अ इवेंट, बाहर में कोई कंपटीशन किया जिसमें अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर। कोई फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर। इट्स नॉट मैंडेटेड बाय द स्कूल, बट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो सकता है स्कूल से मैंडेटेड होता है मोस्टली। तो उस तरह से देख लेना, मोस्टली डिबेट, राइटिंग, पोएम रिसिटेशन, ये सब वगैरह को करिकुलर में आता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर में बाकी सब आता है, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट का मेंबर था या फिर कुछ फंड्स उठाए वगैरह वगैरह। तो दैट इज वन सेकंड, यहाँ पे क्या है ड्रॉप डाउन में आंचल वैसे? Same as the above two. ठीक है, तो Awards and participation. I'm sure you follow what, like, write the most influential। अगर कुछ एक्स्ट्रा के बारे में बात करें, एडिशनली करके डाल दो। और फिर obviously keep something for the interview as well, so that you can talk about them there। I hope the difference between co-curricular and extracurricular is clear। Yes, yes, yes. ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट्स? No. चलो, लेट्स मूव ऑन देन। अदर डिटेल्स, अवार्ड्स, मेडल, स्कॉलरशिप रिसीव। तो ये देखो ऊपर में अब शायद कुछ एजुकेशन से रिलेटेड था ना, बट उसमें यू कुड हैव ओनली रिटन वन थिंग। तो अब ये यहाँ पे आ जाता, आपके पास वो स्पेस उन्होंने दे दिया, जैसे आपने कोई स्कॉलरशिप जीता, कोई मेडल जीता, कुछ भी रैंक आया, कुछ भी अवार्ड मिला, विच यू कुड नॉट हैव रिटन अबव, क्योंकि वहां आप एक ही लिख सकते थे, वो सब आप यहाँ लिख सकते हो। अगेन ट्राई टू बी स्मार्ट। what they are doing is they are setting you up to write everything in this form, and that will leave you with nothing new to talk about in the interview. So be a little smart on this one, don't fall in the trap। राइट द थिंग्स विच विल पुट एन इम्पैक्ट बट आर नॉट दैट टॉक वर्दी। जैसे क्या होता है ना, 10 में मेरे को स्कूल से एक अवार्ड मिला हाईएस्ट लाने के लिए, सो उसमें वो लोग कुछ अंदर नहीं जा सकते। बट लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट ओलंपियाड वगैरह, तो हो सकता है वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, तो वो सब रख देना, ओलंपियाड को इंटरव्यू के लिए छोड़ देना, ताकि इंट्रो में भी बोलने के लिए कुछ नया रहे। अगर आपसे पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू आर जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन हियर, देन they wouldn't like to hear it for much time। but if you tell new things, तुमको लगेगा हाँ भाई इसके पास कितना है, यहाँ पे लिख रखा है, अलग से नया बोल रहा है, so you come out as an interesting person। ठीक है? Yes. ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब योरसेल्फ बाय इलैबोरेटिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये तो प्रीटी सिंपल है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का वीडियो नहीं देखा तो देख लो। स्ट्रेंथ वही डालना जो एमबीए के लिए काम है। सी हो सकता है आपका स्ट्रेंथ हो कि आप बहुत कम सोते हो, बट इट्स नॉट रियली रेलेवेंट। एमबीए में काम आएगा बट इट्स नॉट रियली रेलेवेंट फॉर द प्रोफेसर्स। बट इफ यू आर समवन हु नोज टीम बिल्डिंग, या यू नो हु इज एन इनिशिएटिव टेकर वगैरह, तो दैट इज समथिंग, वो काम आता है एमबीए में। ट्राई टू पुट हाईलाइट दोज थिंग्स इन स्ट्रेंथ्स विच विल शो यू एज अ बेटर कैंडिडेट फॉर एमबीए। एंड नेगेटिव्स में वो, मतलब वीकनेस में वो नेगेटिव्स बताओ जो आपका एडमिशन को इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर लेजी, ये हो सकता है आपका वीकनेस हो, बट इन एन एमबीए यू हैव टू बी ऑन द फुट ऑल द टाइम एंड दे एक्सपेक्ट यू टू बी वेरी वेरी मच एक्टिव। इफ यू से यू आर लेजी, यू कम आउट एज अ, क्या बोलते हैं ना, नॉट सो सुटेबल कैंडिडेट विच इज नॉट योर एम। सो what you can simply do, see there's a difference between telling lies and not telling the truth। I would say be in the zone where you don't tell all the truth। 5 वीकनेस है आपके, 2 बता दो इसमें, जो उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपका एडमिशन को। आई थिंक दैट इज क्लियर आंचल। Yes. इज देयर एनी डाउट ऑन दिस फ्रंट? Yeah. हाँ। In this, they've said describe yourself by elaborating on your strengths and weaknesses.
So, for example, in IIM Kozhikode form, it was write strength, 3 points, weakness, 2 points. So, isme do I have to write like a paragraph? You Like, should actually describe yourself बोला ना, तो it's like tell me about uh, yourself हो गया. While inculcating, I did not catch this. Thank you for pointing out. So it's saying describe yourself. Uh, अब अपने बारे में बात करना. Again, they have left you with limited scope and they want you to include your strength and weakness. So obviously you can't really elaborate on your strengths or your weakness, but you have to touch upon them. Now do it a bit smartly, I would say. Write a bit about your background, your family, what you have done in 10 12 में तो चलो क्या किया पता चल जाएगा, थोड़ा सा कॉलेज के बारे में लिख देना. एंड देन टॉक अबाउट द थिंग्स, द एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह, and उसको लिंक करो. जैसे कि आई हैव, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ इवेंट्स दैट शोज माय, नहीं तो आई वॉज लाइक फाउंडर ऑफ दिस या आई वॉज अ डायरेक्टर ऑफ XYZ सोसाइटी दैट, एंड आई हैव वर्क collaborated with a team of 20 people and pulled off events. So that shows my team building या collaboration skills. इस तरह से try to root your strength with this. Again, then you can say कि I realize that as an individual I might have weakness. So I've recognized these weakness and also tell how you're working towards it. So the thing is, if you know you have a weakness but you're not working towards it, it means you're not open to growth. So if you're writing a weakness, make sure you write the cure that you are doing for the weakness. Sounds good? Any doubts? no, understood. Hmm. ठीक है. Uh, what new skills you developed in past 2 years? So this is a tricky question according to me because you will be grilled. तो मेरे लखनऊ में इंटरव्यू में हुआ था, मैंने ऐसे 2 years के अपने आंसर में एक बार एनालिटिक्स बोल दिया था. आई डिड नॉट एग्जैक्टली डू एनालिटिक्स, बट आई जस्ट सेड दैट वर्ड एंड दे पिक दैट वर्ड अप एंड ग्रिल्ड मी. मेरा पूरा इंटरव्यू उसी पे था एंड आई कुड नॉट आंसर ऑब्वियसली एंड हेंस आई कुड नॉट कन्वर्ट लखनऊ एज वेल. तो बी वेरी कॉग्निजेंट व्हेन यू आर राइटिंग वॉट एवर यू आर राइटिंग. इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ इट, हो सकता है कि आप अपना एक हॉबी वहां से स्किप करके यहाँ पे डाल दो और उसको मतलब शील्ड बना लो कि ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न एंड दिस इज हाउ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. उसमें तो जैसे अगर मान लो आप बैडमिंटन आपका हॉबी है, यू डोंट मेंशन इट देयर, यू राइट कि जब कोविड था वो हेल्दी रहने के लिए बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो अभी वो बैडमिंटन से मेरे को बहुत ज्यादा एजिलिटी मिला, फास्ट डिसीजन मेकिंग को मिला, अभी मैं अपने जॉब में यूज करती हूँ या कहीं भी यूज करती हूँ. यू कैन लिंक इट टू एनीवेयर, राइट. बट इफ यू से समथिंग दैट यू कांट टॉक अबाउट, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. इफ यू कैन, देन इट विल बी द बेस्ट थिंग कि आपने बहुत सारे अपने फेसेट्स दिखाए हैं, आपने अपना हॉबी दिखाया, एक्स्ट्रा करिकुलर दिखाया, यहाँ पे भी काफी कुछ दिखाया जो आपने नया सीखा है. बट इफ यू डोंट हैव कंटेंट अबाउट टॉकिंग अबाउट इट, refrain from putting in new things. Works. Yes. ठीक है. What are your goals in life and how MBA is going to help you? So it's just like they are asking कि, no, tell me your short term and long term goals and why do you need to pursue a career in management, which was I think similar as इंदौर का फॉर्म आया था ना. अभी इंदौर का फॉर्म में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था. तो गिव अ बिट ऑफ बैकग्राउंड कि यू नो व्हाट लेड यू टू योर लॉन्ग टर्म गोल एंड देन वेयर इज द गैप. गैप है कि ठीक है, तुमको बिजनेस में इंटरेस्ट आया है एंड इसलिए तुमने सोचा कि चलो मेरे को ये करना है. लॉन्ग टर्म में मेरा ये गोल है, आई एस्पायर टू बी इन अ क्रूशियल डिसीजन मेकिंग पोजिशन, बट उस मेरे को समझ आता है कि मेरे को उसके लिए सारा बिजनेस स्किल के बारे में पता होना चाहिए. इवन दो मान लो बीकॉम है तुम्हारा, तो मान लो कि इवन दो आई एड बीकॉम जिससे मेरे को टेक्निकल नॉलेज मिल गया बट द रियल लाइफ एप्लीकेशन वाज मिसिंग, सो इसलिए मेरे को एमबीए करना है. तो होगा क्या कि यू आर सेइंग पहले आपने एक बैकग्राउंड बनाया अपना, फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल रियलाइज हुआ, आपका लॉन्ग टर्म गोल फिक्स हुआ. टू रियलाइज दिस लॉन्ग टर्म गोल यू हैव टू, वो क्या होता है ना, टेक अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स और यू हैव टू complete a lot of short term goals. So the first short-term goal here is acquiring business knowledge and getting an MBA and then getting a desirable field or at least choosing a field that you want to go forward into, which an MBA will help in how. It will help in getting knowledge of all the domains, help in shortlisting the domain. प्रोफेसर्स अच्छे होंगे, पीयर्स अच्छे होंगे, अच्छा अलम नेटवर्क होगा, केस कंपटीशन एवर हैपनिंग, कैंपस, दुनिया भर की चीजें हैं बोलने के लिए, which will pave your way towards your long term goal, which is to become a better professional and have more knowledge so that you can take well rounded decisions. मतलब ये obviously ये आंसर सबको नहीं लिखना है, but it's like I have tried to give you a gist कि हाँ ऐसा हो सकता है. Everyone can have a personal story and based on your story obviously your answer changes,
बट दिस इज मोटा मोटी इसी हिसाब से होता है. इज इट अंडरस्टूड आचल? इज देयर एनी डाउट हियर? Understood. Also, I wanted to ask, would it be better if I was to write a specific position I see myself at, like a दैट specific role? लिमिट्स यू, दैट लिमिट्स यू आई बिलीव. मान लो सीएमओ तक ही जाना है तो सीईओ क्यों नहीं बनना? सीईओ ही बनना है तो फाउंडर क्यों नहीं बनना? फाउंडर एंड सीईओ क्यों नहीं बनना? ठीक है ना? Mm-hmm. अब देयर इज नो लिमिट एज टू वेयर ह्यूमंस कैन गो, राइट? बट इफ यू लिमिट योर, Right. देन दे विल सी कि अच्छा ये यहाँ पे जाके रुकना चाहते हैं, मे बी किस लिए रुकना चाहते हैं. देन दे विल क्वेश्चन यू ऑन दिस. क्या तुमको नहीं लगता तुम सीईओ बनने लायक हो? या क्या तुमको नहीं लगता अगर तुमको एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिला बिजनेस का तो यू विल बिकम अ फाउंडर और नॉट? इफ यू बिकम अ फाउंडर विल यू स्टिल बिकम अ सीएमओ? मान लो इफ यू रोट सीएमओ, और यू वुड यू बिकम अ Mm-hmm. सीईओ? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट? दे कैन ग्रिल यू. सो द की इज दैट whatever position I'm in a position of power. You want to say that कि मैं जो डिसीजन लूँ उससे बिजनेस में कुछ इफेक्ट पड़े. ठीक है. अगेन, if you have a certain level of aspiration is fine if you can sustain it. कि हाँ मेरे को सीएमओ तक बनना है, मेरा पर्सनल एस्पिरेशन. if you can sustain it, clarify it, defend it. but if you cannot defend, तो वो लोग तुम्हारी मार सकते हैं. टू थिंग्स है, ये टू वेज है, दो धारी तलवार है. दे माइट अप्रिशिएट द क्लैरिटी कि आपको इस गोल तक पहुंचना है, बट दे माइट ऑल्सो किल यू ऑन की इससे आगे क्यों नहीं बढ़ना. तो इट्स ऑलवेज अ टफ सिचुएशन टू बी. इट्स योर कॉल. इफ यू कैन डिफेंड इट वेल, गो फॉर इट. Okay. State a challenging situation that you have encountered in your personal or professional life, and what were the two major learnings from it? I think this is very clear question, but try to have it from your professional life if you are in a work. अगर नहीं है वर्क एक्स तो ऑब्वियसली, अगर इंटर्नशिप्स है तो इंटर्नशिप से लिंक कर सकते हो. पर्सनल लाइफ में मोस्टली ऐसा कुछ मतलब बहुत कुछ होता है. एंड व्हाट टू लर्निंग्स यू हैव गॉट इट्स मोस्टली पर्सनल. I'm not sure how much. If you want to show your human side, your vulnerable side, it's fine. I mean, I did it in my all my forms, which was like most significant accomplishment wala wo sab mein. But it's up to you that how much you want to open yourself in front of them, and which side you want to show. If you want to show that you are a better professional, then you can take your professional का कोई भी एक instance and then tell your two learnings. Or you can do either ways. If you want to show your human side, then tell a personal story and tell your two learnings. Like there's no right or wrong here, obviously. Understood. ठीक है. इसके अलावा कुछ है? There is educational details, employment history, family details, and then just uploading the documents. So can we access it without writing anything? Educational details, I have, yeah, we can access it. Right. तो उसमें कुछ ऐसे एजुकेशनल डिटेल्स में कुछ वो है क्या, क्या बोलते हैं, कुछ भी अनयूजुअल जो एड्रेस करना No, no, चाहिए? सिंपल. they've just asked 10, 12 graduation marks. That's it. ये बार लॉग इन कर लेना. डोंट यू हैव इट सेव अनयूजुअल थिंग है? ये बार एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में जाना. दिस. I had a doubt here, हाँ like हाँ बोल. undergrad mein. So they've given this part examination type. Mine was semester wise. ठीक है. So इसमें सीधे was percentage or CGPA. Now this aggregate percentage until completed is conversion factor. CGPA to percentage have converted. ठीक है. So यहाँ पे should I put CGPA or should I put percentage for each semester? तो आई थिंक आइदर वे वर्क, बट यू कैन पुट लाइक, अगर ये लोग परसेंटेज में ही लास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू हैव अकाउंटेड द कन्वर्जन फैक्टर, राइट? Yeah, this Mumbai University का document हाँ, दे saying हैव the अकाउंटेड conversion. फॉर दिस ना. Yeah, यू yeah. कैन जस्ट सिंपली लाइक सीजीपीए को इनटू अपना कन्वर्जन रेट कर दो एंड परसेंटेज लिख दो. आई होप द एवरेज इज कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे हैव रिटन. Yeah, I have the same SGPA in every semester. So same ही आ रहा है. CGPA is the SGPA only. नहीं नहीं, सीजीपीए और एसजीपीए के बीच में डिफरेंस होता है. No, no, I'm saying because all the SGPAs are तो same. हाँ सेम So है तो the average सीजीपीए तो is, सेम हो ही जाएगा, राइट? हाँ, एवरेज तो वैसा. सेम हो ही जाएगा. Yeah, सही that's what. है. ठीक है. आई थिंक दिस इज फाइन. एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, company contact phone, okay, location, the designation may write your current designation, doesn't matter in which designation you joined, but what is your current designation. एक बार नेचर ऑफ जॉब वाला उसमें ड्रॉप डाउन में क्या क्या है बताना. आई कांट सी. एक बार. There is
Yeah, there is different domains: sales, marketing, administration, HR, operation, finance, consulting, अच्छा engineering, ठीक systems है, IT, ये तो etc. क्लियर है। आई थिंक पीपल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस। एंड डोमेन में क्या है मतलब, यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रिक क्या Chemic, वो सब। हाँ, like NGO, manufacturing, IT, insurance, government, PSU, defense, FMCG, ठीक education.com. ठीक ठीक। कैन वी फिल मल्टीपल, एक बार नीचे जाओ, कैन वी फिल मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंसेस है? No, I don't think so. ठीक है, तो व्हाट, एक बार कुछ भी लिख के देखो। लेट्स ट्राई, लाइक वी हैव 6 months, वी कैन ट्राई। कुछ भी एक तो कहीं भी डाल दो, कुछ भी। And ऑर्गेनाइजेशन now I should ABC कुछ भी organize. डाल दो। एंड नीचे कुछ भी डेट्स डाल दो। Mm, नहीं जनवरी नहीं, जनवरी नहीं, जनवरी 2022 कर दो। 2020। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट कर लो कोई सा भी। एंड यहाँ पे ये कर लो दिसंबर 2023। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू ही आ रहा है, तो आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन राइट मल्टीपल। लेट्स सी, एक बार सेव एंड कंटिन्यू कर। यू कैन ऑलवेज क्लियर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। no, I don't think we can write multiple. Oh no, there's an option to write multiple. ठीक है, सो राइट द फर्स्ट वन, देन फिर save it, then the second one. Try with, like, start with your most recent and then go down the order. I think that will work. अभी जो सबसे recent है उसको सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर नीचे होना चाहिए, like the previous one and the previous one, उस हिसाब से। Don't write it like up and up to down, like down to up करो। बाकी I think बाकी सब everything is clarified। Yes, चलो, great। um ठीक है, employment highlights में obviously write about a bit about your job description, what you have done, put in a bit of numbers, like if you have tagged what good you have done, कि efficiency 10% से बढ़ा दिया या ये वो, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, so that they feel that you have created impact in your job। ठीक है, anything else that yes. should be addressed? यहाँ पे family डिटेल्स में कुछ ऐसा है? ठीक Just the है, basic, I believe. जस्ट द बेसिक। अपलोड डॉक्यूमेंट में भी कुछ नहीं होना चाहिए, आई थिंक। फिर तो थिंक सारा डॉक्यूमेंट का एक साथ पीडीएफ बना के अपलोड करने बोला, राइट? ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है ये? Yes. Um, 10th mark sheet, 12th mark sheet, undergraduate degree, final sem mark sheet, all mark sheets. Snap admit card and scorecard is also there. Do we, how do we select though? I mean, can we upload multiple things? कैन यू ट्राई Because, एक बार? for कुछ example, I कर- selected 10th mark sheet. हाँ, आई हाइड इट, डोंट वरी, बस एक बार करके दिखा दो। लेट्स सी Yeah, yeah. अपलोड मल्टीपल। एक बार कोई भी फाइल। Just a sec. ठीक है, एक बार सेव That's, करना। ठीक है, सेव करना, सेव। ठीक है, oh yeah, it's लॉग allowing us to इन। select multiple. ठीक है, यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग आंसर। So this is all about SIBM form. Hopefully you got some kind of structure कैसे करना है, and if you have any doubts, feel free to type in the comments. I'll address it from my limited knowledge, and if I am not able to, then I'll ask someone so that I can give you the correct information. But my recommendation in either case is to call up the admission office and get it clarified from them जितना जल्दी हो सके, ताकि like you know, कब मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ, कब आप फिर भरे, इतना कौन वेट करे? Just don't delay it. Call the admissions office, they're always there on the call. They'll take your doubts and they'll answer it very patiently. At least in IIMs they do. So I hope they do it for SIBM as well. But thank you so much, guys, for being here. Thank you so much, Archel, for giving your time.
I hope it was a productive session for you. And now you will also be able to help people with their doubts. Uh, Thank you so much, everyone. Good day. We'll see you soon with the HR series that will start tomorrow or day after tomorrow. It's gonna be fun. Bye bye. All the best.